we can start it. ये पता what is thermodynamics? क्या? What is thermodynamics? एक thermodynamics का मतलब क्या होता है? Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हाँ सर एक फिजिक्स की ब्रांच है कह लो, हाँ जो डील्स विद द एनर्जी एंड द वर्क ऑफ अ सिस्टम। राइट ठीक है. हम्म. और फिर इस चीज को तीन लॉज गवर्न करते हैं। ठीक है. So it deals with the exchange of heat energy between bodies ओके। and conversion of this heat energy into mechanical energy ओके। and vice versa. So if you have a system in thermodynamics, then the way to define the system is uh, generally a gas is taken. If there is a thermodynamic system, the way to define this is using pressure, volume, temperature, and internal energy. These are the variables which are used to अरे इसमें भी क्या तीन टाइप के सिस्टम होते हैं क्या? तीन ओपन, टाइप के क्लोज और आइसोलेटेड। हाँ यस सेम कोई फर्क नहीं उसके अंदर. Right? So these are also known as thermodynamic pressure, volume, temperature. These are known as thermodynamic state variables. कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों को पता नहीं होता है कि पूछ क्या रहे हैं, या एक्स वाई एक्सिस जैसे होता है. राइट, एक्स वाई एक्सिस. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये पी वी टी वगैरह, इनको कई बार इस तरह से भी बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स. थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। भाई 3 डायमेंशन में एक्स वाई जी होता है ना, जब हम्म। इसके इसके ग्राफ बनते हैं तो पीवीटी यूज होता है. So whenever somebody is saying thermodynamic coordinates, he is actually referring to the graphs of PVT. What is surrounding? सराउंडिंग्स। Anything which is outside of the system द is called सिस्टम। as surrounding. और सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है। Uh, Anything outside the system. Anything एनवायरमेंट ही बोल outside दो, the सिस्टम की uh, एनवायरमेंट। the system, but has a quality that it can exchange energy with the system. Anything outside the system and can exchange तो energy फिर ओपन और क्लोज सिस्टम होना चाहिए ना? uh, with the system and has direct effect on the behavior of the system is known as surrounding.
मतलब हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, अगर आपके पास एनर्जी है, हाउ इट कैन बी ट्रांसफर्ड एज हीट और वर्क. इफ यू वांट टू ट्रांसफर energy to a system, right? हम्म, Yeah, between for example, this is your system and this is your surrounding. Now, what you want is you want to transfer uh, energy to the system from the surrounding. ऐसा नहीं है कि you can just transfer it. There are two ways. One is the way which is heat. The other way to supply is work done. There are two ways you can supply energy to a system, and the two ways are heat and uh, work done. Both are capable of supplying heat energy to the system. Sorry. So if you want to supply energy, you have two paths. Either supply heat directly or do some work on the system. The system will get the energy. Right? So most of the chapter dwells on this thing only. Okay, I have a system, and generally system in the context of thermodynamics is nothing but a very simple system of a gas in a piston. सिलेंडर के अंदर रख देते हैं गैस को, ये गैस है, ये गैस आपका को प्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, जो भी कर लो आप. तो ये आपकी सराउंडिंग होती है और ये आपकी गैस है. ये एक सिंपल सा सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए बनाया हुआ है. ये गैस है एक. तो मेन फोकस रहता है एनर्जी एक्सचेंज. सो एनर्जी exchange is the main focus. So that is, but the ways to do that is heat and work. So whenever you do a thermodynamics problem, the basic should be clear that I'm working on a problem of energy exchange and I have two tools with me. One is heat and then second is work done. And you will see those laws, law of conservation of energy being used and all that. कि कैसे वो, when we say energy, what is energy, heat, work done, etc. So thermal properties, if you see, when we studied, there was no concept of work done, internal energy, कुछ नहीं था वहां पे. वहां the whole focus was heat transfer, that's all, right? We never mentioned anything about work done. So that's a distinction between the two chapters. ओके। Whenever you do a thermodynamic problem, think in terms of surrounding system being a gas, and energies are getting exchanged via the mediums of heat and work done. So there are three types of systems. We are not going to deal with open systems here because generally matter exchange is not right. So if you can exchange energy and matter both, right, with the हाँ surrounding, you are an open system. हाँ जी, नो आई ये नो। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है. We will not study this. और फिर If you can. आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम ही पड़ेगा। So closed obviously is when you can exchange only the energy, right? Only energy. And then we have isolated systems. These can neither exchange energy nor matter. दोनों नहीं इसके अंदर पॉसिबल होते हैं, right? And I think we have already done this, that the variables which are used throughout to describe a thermodynamic system, which is gas. How do you describe a gas? A lot of people will say, जी इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इतना इसका प्रेशर इतना है. उसके अंदर हम और भी बातें बोलेंगे. हम ये भी आइडियल बोलेंगे गैस कि इक्वेशन पीवी हाँ, इक्वल्स टू एनआरटी। one of the ways that is a formula law, right? But thermodynamic system के लिए moles भी यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, like you said, PV is equal to nRT, right? तो मतलब सिस्टम को डिफाइन करने के लिए there are variables which are PVT. और जो whatever you just said, PV is equal to nRT is known as one of the equations you have mentioned. द आइडियल Equation of गैस इक्वेशन। equation of state. What is the state of the system? गैस की स्टेट क्या है जी बताओ.
तो गैस की स्टेट डिफाइन करने के लिए जो आपके पास इक्वेशन है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. इट एक्चुअली लिंक्स ऑल पीवीटी, राइट? इट इज केपेबल ऑफ लिंकिंग पीवीटी, moles and everything. So everything gets linked to each other and that creates a equation of state, ठीक है. right? So some कई बार क्या होता है वो ऐसे इंग्लिश होती है, वो तो होता तो कॉमन सेंस है. Somebody will draw a graph and the thermodynamic coordinates, thermodynamic coordinates बेसिकली वो न्यूमेरिकल के अंदर ऐसे लिखा होगा 2p 2t 3v. You should know what are they referring to. They're referring to a three-dimensional XYZ type of graph of pressure, temperature, volumes. So you should be able to know the basic words. That's all. And you already thermodynamic process is nothing. It's essentially exchange of heat between a body and surrounding. And there are other processes involved, which are work done and internal energy. Right. So the whole focus is exchange of heat, exchange of energy, and accompanying processes such as work done and internal energy. ठीक है जी. So if you and if you look into PVT, for example, right? So we are taking names like work done, energy, internal energy. We will tell what internal energy is. It is basically the energy of a molecule, kinetic energy, rotational energy, thermal energy, vibrational energy. All those energies associated with the molecule is called as the internal energy of the gas, if you sum them up. So we are talking about work done, U, we're talking about Q, because you know you have a background in chemistry, right? So and then we are referring to PVT. So these are also known as macroscopic variables. Okay, macroscopic variables. These are not microscopic. They are very, very macroscopic. बड़े मतलब. हाँ, बड़े. तो मतलब इनमें अगर कोई चेंज हो जाता है, तो we say कि there is a change in the if you're varying these PTV variables, if you're doing something with them, what you're essentially doing because of that is that you are subjecting the system. So let me just articulate. So if you are playing around with pressure, volume, temperature, right? And I say these are macroscopic variables. I think what they mean is there is more microscopic way of studying this, but we don't study that. We only study mota pressure, kya, volume, temperature. If you do any changes in these, in what are called as macroscopic, then what you say is that we have subjected the system, which is the gas, to a thermodynamic process. कुछ ना कुछ करा है आपने. You have done some thermodynamic process जिसके अंदर the work done U and Q have been introduced. मतलब कुछ चेंज करा है आपने उनके अंदर. अगर आपने इन PVT से कुछ चेंजेस करें तो you have subjected the thermodynamic system to a thermodynamic process. Right? So you have to be watchful that what's happening in the question, as if the pressure is changing, volume is, and what are the consequences on the internal energy, which is generally written as delta U, Q, and work done. So इनसे change करने से the macroscopic variables or the thermodynamic variables, how the thermodynamic process happens, which is टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगा, राइट? तो टेम्परेचर बढ़ा तो आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. तो यू हैव टू सी द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड देन यू हैव टू सी द these thermodynamic process related changes which you are doing. So PVT actually have an impact on the thermodynamics. So right, so PVT is essentially the variables, and they will result in situations of heat exchange
They will result in work done, mechanical work done, piston moving up, down, here and there, etc., etc. So this is the way you need to approach the topic. ठीक है. Yeah. ऐसे देखना है उसको बेसिकली. तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करनी है तो पहले आपको वो करना है, पीवीटी में देखना है आप क्या हो रहा है उसके अंदर. सो वेरिएबल्स एनीवे. सो if you transfer energy, if you're doing something with PVT and there is a transfer of heat to the system, right? Then we will say that energy which is transferred to the system, and then there are words like, you will see the words like reservoir. Okay. Apart from this word system, which is a gas filled in a cylinder with a piston and all that, you may see words like reservoir. A reservoir is something which has a lot of heat, which is a positive heat because it is it is capable of supplying heat to the system. So whenever you have because exchange has to happen of heat, तो वो कैसे करोगे आप, या energy, तो वो कोई ना कोई, you need a source. Reservoir is that source of positive heat. So it's a thermodynamic term that there is a reservoir in the question, there is a sink in the question, stuff like that. दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो रिजर्वायर यूज होता है और दूसरा जो वर्ड यूज होता है उसके अंदर. सो दिस अ थर्मल रिजर्वायर. इट इज नॉट अ वाटर रिजर्वायर बट अ थर्मल रिजर्वायर. इट इज केपेबल ऑफ गिविंग पॉजिटिव हीट. अपना टेम्परेचर इसका नहीं बदलता जब भी हीट सप्लाई करता है, इतनी इनफाइनाइट इसके पास हीट होती है, राइट. और सो इफ यू हैव heat being transferred into the system from the reservoir, then it's positive heat. But if you're taking away heat from the system, then it's negative heat. Right? ये सब sign convention आएगी अभी, don't worry about it. So broadly, you should know that there is something called as a thermal reservoir. The names given are, you will see sink वगैरह भी आएगा word. So a reservoir is a thermal reservoir in thermodynamics. It is capable of supplying heat. When it supplies heat, it is positive heat. When it takes heat, it is negative heat, right? And then whenever you subject a system to some changes in PVT in a certain manner, right? There is a way then delta U, Q, W behave. And so the resulting thermodynamic processes, because of control of PVT of the system, results in three types of processes. We will study them in detail. One is the isothermal process, right? Which means the temperature is kept constant, and then we observe what's happening to U, what's happening to Q and W, stuff like that, right? So temperature remains constant, isothermal. Isothermal means temperature will remain constant. Then you can have an adiabatic process. Adiabatic process. And no transfer of heat to it. It is no transfer of heat. So it is not connected to any reservoir. Neither it can be supplied heat and nor any heat can be taken away from it. And then there is something called as isobaric process. Okay. Constant This is volume. बारिक कोरिक होता है वो. अच्छा, constant pressure. Isochoric is Constant pressure. isobaric. हाँ जी, constant pressure. Right? So some types of processes are happening because of certain conditions, temperature, pressure, and all that. So isochoric, we have discussed, is also known as isovolumetric. Iso का मतलब होता है same. Iso volume remains unchanged. Okay. And then we have something called as processes which are cyclic and non-cyclic processes. Non-cyclic processes. Okay, these are just jargons you should know. न्यूमेरिकल करने के लिए ये वर्ड्स आते हैं कई बार, तो दिमाग में डेफिनेशन भी हो तो करा जा सकता है, राइट. सो द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, द इनिशियल एंड final state is same. There is no difference. Whereas a non-cyclic process, the initial state and
final states are different. When I say states, I'm referring to PVT and all of that. Right? In a cyclic process, you may have a PV diagram like this. You started from here, you went like this, you went like this, you went like this. All this, all this while when you moved, right? A thermodynamic process happened in each of the situation. This was a thermodynamic process. This was a thermodynamic process. There was something to do with work done, internal energy. But look at the graph. You came back to the initial point. So it's a cyclic process. And generally in a PV graph, though it's work done under the, ऐसे ही बता रहा हूँ पहले ही थोड़ा ये वर्क डन होता है पीवी या पीडीवी, ये हमने करा भी हुआ है पहले भी केमिस्ट्री के अंदर. हाँ हाँ, करा हुआ है, काफी करा हुआ है. Something very something, and then you will hear words like very important word which is called as quasi static process. Very important word ये for नहीं you to सुना understand. केमिस्ट्री में. हाँ, so ये बेसिकली क्या होता है कि जो सिस्टम में जो भी चेंजेस आपको करने हैं, right, system has to be kept in a thermodynamic equilibrium. So you don't do anything thermodynamic equilibrium maintain करते करते हैं. तो इससे your initial state was defined with the help of P1, V1, T1, right? And the final state is P2, V2, and T2, right? So if you do this change from P1, V1, T1 to P2, V2, right, in such a way that the system remains in thermodynamic equilibrium, then the process is called as a quasi. Basically, it means to do a process in a very, very slow pace. Quasi static process. You don't do this suddenly, right? But reality is that if you see thermodynamic systems, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं होता कि गैस का जो पिस्टन है वो मतलब ये है फिर थोड़ा सा हिला फिर थोड़ा सा हिला. द रियल प्रोसेसेस आर नॉट क्वाजी स्टैटिक एंड बट हम मान के चलते हैं कि भाई प्रेशर ऑफ द गैस हैज चेंज, बट रियलिटी ये होती है कि प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द cylinder may not be same everywhere. It takes time to become equal in all the areas of a cylinder. तो हम स्लो स्लो करते हैं जिससे कि जो डेल्टा चेंज होता है किसी भी चीज के अंदर वो जो है इक्विलिब्रियम रहे, मतलब सब कुछ सेम रहे और टाइम मिले उसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल प्रेशर, you change the pressure and pressure inside the whole gas may not be same. It may differ in different parts of the gas. So it takes time to settle down and reach that state. तो molecules भी इनका temperature इकट्ठे नहीं T2 पे पहुंचेगा, takes time. So there is a idealized way of changing the state, and that idealized way is that you conduct any process at infinitely slow pace. Okay, and that infinitely slow paced, a very idealized process होता नहीं है. हमने बना रखा है कि हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है दे डोंट डिस्टर्ब. टेम्परेचर बदलेगा तो सबका एक ही टाइम पे बदल जाएगा, प्रेशर बदलेगा तो सबका एक ही टाइम पे बदल जाएगा. तो all these processes we study are done at infinitely slow pace. That's a catchword for you. If you see a quasi-static process, what you're saying is I am doing a very idealized process जो exist नहीं करता, but हमने जैसे ideal gas बना रखी है वैसे हमने ये भी बना रखी है कि हमारे processes जो है quasi-static processes होते हैं इसके अंदर. नहीं तो somebody can say तुम्हारा तो वॉल्यूम अभी सॉरी ये तेरी आवाज टेम्परेचर है हर जगह पे सेम नहीं हुआ तो व्हाई आर यू वेट वेट फॉर इग्नोरिंग. तो तेरी आवाज कट रही है आपकी. वो इंटरनेट प्रॉब्लम. अब ठीक है बस. हाँ, थोड़ी थोड़ी इज इट बीच बीच फाइन में नाउ? कटती है. बीच बीच में कटती है. अब ठीक है. ये अभी तो ठीक है.
सर। हाँ जी, आ रही है। हाँ, आ रही है। व्हाइट बोर्ड चला गया। हेलो। चलो, व्हाइट बोर्ड बंद हो गया है। आ रही है। आ रही है, योर व्हाइट वॉइस इज बोर्ड ब्रेकिंग। बंद है। लोड हो रहा है ना। ठीक। फिर आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या हो रहा है यार ये? अब ठीक है। हाँ जी। कैन यू सी इट नाउ? आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गया। यस यस, आ गया। ठीक है। टेम्परेरी इंटरनेट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट द वर्क डन इज पीडीवी। DW. Right? So the system starts from a particular temperature, which is P initial, V initial, and temperature T initial. In the final state में PF, VF and TF होता है। और जो गैस होती है उसका जो ये एरिया ऑफ द पिस्टन है, और जो फोर्स है नीचे गैस की, राइट, दैट इज F. सो द वर्क डन is force into displacement, and you divide and multiply this by area into area. So this becomes pressure. Okay, so this is pressure A dx is equal to P dV. This is the work done when the piston is pushed outward. Right? If there is a finite change in the so this is in very small change in dW. So whenever you have to find work done, you have to find this P dV, V initial to V final. ये हमारा टोटल वर्क डन होता है। ठीक है। Whenever volume changes, pressure changes, and you must know how these two are linked to each other. To complete the integration, क्योंकि वेरिएबल तो डीवी है ना। पी और वी में रिलेशनशिप अगर पता चल जाए तो integration. So let's talk about one more thing, which is known as an indicator diagram.
ठीक है। So if you have an indicated हेलो यस, थोड़ी आवाज कट रही थी। हेलो। हेलो। नहीं नहीं, मेरा तो यार ये जूम बंद हो रहा है बार बार। अच्छा अच्छा। एक मिनट, आई एम जस्ट कंडक्टिंग अ स्पीड टेस्ट। जूम बंद हो गया मेरा, बार चौथी बार। स्पीड नहीं है। वेट। स्पीड टेस्ट। रन स्पीड 1 Mbps। हेलो। यस। आ रही है आवाज, आ रही है अब? हाँ, आ रही है। 1 Mbps रह गई थी स्पीड। टाटा की। पर ठीक करने चालू करा दोबारा मैंने। सिर्फ 1 Mbps। कमाल है यार। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंडिकेटर डायग्राम। सुना, इंडिकेटर डायग्राम पढ़ा था हमने। इंडिकेटर डायग्राम। जो प्रेशर वॉल्यूम का जो होता है ना, प्रेशर वॉल्यूम वाला। हाँ, ग्राफ। हाँ। पीवी जनरली पीवी होता है, वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं। और द दिस इज, फॉर एग्जांपल ये बनाया हमने। तो जो इसके नीचे एरिया होता है ना, ये इंडिकेटर, ये जो ग्राफ है इंडिकेटर, इसके नीचे का जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन। ओके। निकलता कैसे है भाई? पीडीवी, V1 to V2। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, पीवी, तो ये पी इनिशियल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं V इनिशियल पी आई, वही थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट। और ये है पी आई, ये तो सेम ही रहा, तो V फाइनल। और प्रेशर सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, रेक्टेंगल, ये दिस विल टेल यू द प्रेशर इज कांस्टेंट। सो वी एफ माइनस वी आई इज द वर्क डन। यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ गई आपको। तो व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? पॉजिटिव वर्क क्या होता है? इफ देर इज एन एक्सपेंशन,
If there is an expansion, it is positive work. A to B. Pressure, volume, positive work. Positive work. Okay. And then this is when the expansion की जगह when you have compression of the system. आप सिस्टम को दबा देते हैं तो जो आपका जो ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब योर वॉल्यूम इज हायर एंड योर वॉल्यूम लोअर्स। यहाँ वॉल्यूम आपका इनिशियल कम होता है और बढ़ के आप ज्यादा कर देते हो उसको। सो इनिशियल वॉल्यूम से आप फाइनल की तरफ जा रहे हो, ज्यादा वॉल्यूम आप यहाँ पे कम हो गया, सो कंप्रेशन। सो दिस विल बी नेगेटिव वर्क। whenever volume reduces the work sign is negative। तो साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। और ये भी कर सकते हैं हम कि जो वर्क डन होता है डिपेंड्स ऑन। सो हम बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम पढ़ रहे थे, बट इंडिकेटर डायग्राम में हम पीवी पढ़ रहे हैं और इंडिकेटर डायग्राम की वजह से हम वर्क डन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? दैट इज अवर फोकस एरिया। इंडिकेटर डायग्राम में हम क्या पढ़ रहे हैं? पीवी डायग्राम्स। पीवी डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? वर्क डन। वर्क डन हमें दो टाइप के दिख गए। ये भी पता चल गया कि पीवी में एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस वर्क डन और कंप्रेशन इज नेगेटिव। सो वर्क डन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एक्चुअली। तो अगर साइक्लिकल प्रोसेस है, बंद वाला प्रोसेस है, तो ठीक है, आप पहले ऐसे गए, फर्स्ट यू वेंट लाइक थ्रू सम like this and then you came back to the same process, right? So this area, right, which will be nothing but पहले आप ऊपर वाले ग्राफ से इंटीग्रेट कर लो। ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ग्राफ का जो उसके नीचे जो आएगा सारा, दैट विल बी दिस वर्क डन। और जो नीचे वाले ग्राफ की वजह से होगा वर्क डन, वो ये वाला होगा सिर्फ। उसका मैं अगर कलर अलग ले लूं तो वो ये वाला होगा सिर्फ, राइट? द ग्राफ बिलो। So the net work done will be, this will be the net work done. Area enclosed. Area enclosed will be the total work done. Another thing is you have to be careful about the slopes in this. Okay, slope में, for example, and slope में क्या है मतलब ये, you go like this and you say I want to calculate the work done from here till here. Okay, so this is your work done and your volume initial and volume final. But the other way you take a path of is this. You can see this, although the volume here is also same, the volume here is V final, identical है बिल्कुल, V initial और V final, but ये वाला area ज़्यादा है, more area, right? So this is less area. So even though the final states are same, because of the way you took the thermodynamic process, the the work done differ, right? So this is bigger area, this is more area, so more work done. And if you're going like this, you're expanding, and here also you're expanding, but your work done is slightly less. ठीक है जी। तुम्हारे स्कूल में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे विल गिव यू अ, ये क्या हो गया, school papers have a question like this. They will give you a PV indicator diagram and then they will make a triangle out of it. तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा बेसिकली, राइट? विच विल बी V initial, V final, and this is your P. This is isobaric, so this is P initial, and this is P final. So if this is A, B, and C, then work done is equal to half base VF minus VI into half base into height. So you can see the height is P
final minus P initial. And so this is the height. And this we're referring to a cyclic process. Simple cyclic process for school, which involves a triangle. Very simple. And you, depending on what are the directions of the each of the process, this could be the direction, for example, right? Sorry, ये direction हो सकती है overall. So you can see the finally where have you reached. Your work done is what is the nature of the work done. ये पॉजिटिव वर्क डन लग रहा है या नेगेटिव वर्क डन लग रहा है ये वाला. मिनट. What do you make of it? This is positive work or negative work? पॉजिटिव. Positive. How did you decide it? Your VF minus VI is positive. Your यस. PF minus is also positive, right? But let's say you're given a school level. ये तो school में आएगा triangle, rectangle ऐसे like you showed me your assignment. So or the question paper जो 70 number वाला share करा था, right? So let's say you have another scenario where they give you a circle. So this is your circle, and if this is your circle, this is your circle, and you are asked to calculate, and they give you a direction, which is this. This is your direction, and so this is your P final. But the direction, be very careful. It's like this, and this is your P initial, right? इसमें volume के point of view से अगर मैं देखूं, so that's your one side, and then this is another side. So if you were to see, this is V2 and this is V1. So if I were to calculate this will be pi by 4. How will you calculate? इसका radius होगा ना कुछ. ये कितना है? ये डाया कितना है इसका? P final minus P initial, है ना? हाँ जी. और इसकी जो ये है, ये वाला, this is V2 minus V1, right? So the convention is, यहाँ पे अगर we were moving in a clockwise manner, clockwise, ये clockwise था और ये anti clockwise है, right? If the graph is anti clockwise, it's negative work. If the graph is clockwise, it is positive work. So that convention should also be clear in your mind कि कैसे हमने निकालना है इसको. So pi by 4 P2 minus P1 multiply by V2 minus V1. Generally, you will write pi r square. The way you have to calculate this. अगर ये circle है, exact circle, तो इसने एक ये वाला वो लिया है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, रेडियस बराबर ही है. ये न्यूमेरिकली मे बी दे आर सेम, बट जस्ट टू शो पीवी he has used this concept. Area under the graph is not necessarily going to be coming from integration. But circle है तो कोई जरूरत नहीं है निकालने की, इंटीग्रेशन करने की. You can just do pi r square. That's all. और ये क्योंकि ये डायमीटर है तो इसको लिखने के लिए, रेडियस लिखने के लिए 2 होगा, और v फाइनल vi by 2 ही होगा. तो इफ यू डू पाई इंटू r न्यूमेरिकली इक्वल, तो यूनिट्स आर डिफरेंट, इट विल बिकम पाई r स्क्वायर. ठीक है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी क्लैरिटी एज अ थंब रूल, कीप इट इन योर माइंड. PV indicator diagram is used to calculate work done. Work has a lot of sign convention which is used, and you will have to use this in a lot of numericals. So basic work done क्या होता है जी, इसमें न्यूमेरिकल आएगा.
Let me just see your assignment if they have given any question on work done. I think you had shared one. You had shared a 70 marker paper. Yes, sir. May last में I saw the work done questions actually. Conservation of momentum, 10 meter per second. Case study 2, the first law states is concerned with good case study. हाँ, so exactly जो हमने पढ़ा है. Let me just show you your स्कूल पेपर क्वेश्चंस. और मुझे याद था कि ये कहीं ना कहीं पूछा तो है इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 3. आई थिंक ये वर्क डन सही है तो नहीं, एक नहीं कर पाओगे. बट आई थिंक द सेकंड वन is for you to do. You can attempt it at least because it only has work done. It has no mention of heat. Take this. See question number 4. There are 3 paths which are given. Separate paths. Okay. And you have to decide where is the work done, maximum, minimum. Which one of the following is correct? क्वेश्चन नंबर 3 में भी वर्क डन था बट वो हीट वगैरह के क्वेश्चन आ गया था, छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 4, योर स्कूल. एरिया अंडर द कर्व बेसिकली, राइट. हम्म. वही जो हमने पढ़ा था अभी. एरिया कब ज्यादा होता है कब कम होता है. Work done by a path ADB. आई थिंक एसीबी का एरिया और ज्यादा नहीं हो जाएगा उसके नीचे. हम्म. अगर एसीबी के नीचे मैं लाइनें खींचूंगा ग्राफ की, दैट शुड बी द बिगेस्ट एरिया अंडर एसीबी. नीचे तक खींचूंगा ना मैं तो. आई थिंक वी बट एक डिस्कस दिस, मिनट. राइट. ये हमने अभी डिस्कस करा ये वाला. नहीं नहीं, ये वो और तो ये. ठीक है. बट ECB और ADB है, इसमें ADB भी ऑप्शन है. एडीबी तो एसीबी से ज्यादा नीचे उसके अगर बनाओगे तो नहीं बना पाएगा. हाँ. नहीं समझ में आया. नहीं, एक मिनट. ACB भी. अच्छा, उसका एरिया ज्यादा. एसीबी के नीचे का जो एरिया है एरिया है, हाँ. अच्छा, ये ये बात ठीक है, समझ. एसीबी है. ओके. किसका ठीक सबसे है. ज्यादा होगा? ACB का सबसे ज्यादा होगा, फिर समझ गया. अभी तो हमने पढ़ा ऊपर ये हाँ हाँ. मैं बस देख रहा था. एग्जाम्पल में ये वाला. ठीक है. ये वाला. एरिया अंडर द ग्राफ कर्व. हाँ, लेस एरिया मोर एरिया. इन्होंने एक चॉइस और दे दी बीच में, ये वाली स्ट्रेट लाइन. क्वेश्चन वही था. ठीक है. ओके. ठीक है. ओके. मतलब you can expect some numericals on. So for example, integration में जेई में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ विल दे. सो दिस वाज ए स्कूल लेवल. वेरी हम्म. स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑल दैट. तो क्योंकि वो जेई मेंस जैसे पेपर के अंदर वो दे विल गिव यू अ ग्राफ, राइट. एंड देन दे विल से दैट दिस इज योर graph and pressure is linked to the volume as alpha v square. Okay. This is the way they're linked to each other, ठीक है. right? And say the original volume initially when you start, यहाँ से आपने इन स्टार्ट करा था प्रोसेस, तो ये अगर है तो ये इसकी रीडिंग आपको दे दी 1 मीटर क्यूब. और लिख दिया दिस इज इनिशियल, और यहाँ लिख दिया फाइनल. ये हो गया 2 मीटर क्यूब. और ये जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है P वर्सेस V का, इट फॉलोज दिस इक्वेशन. ठीक है. अल्फा की वैल्यू दे दी आपको 5 एटमॉस्फियर्स. मतलब देनी तो चाहिए थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बट ठीक है. अल्फा इज सम वेरिएबल व्हिच इज रिटन लाइक दिस. एंड क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ दिस
you have to find. So this is an ideal gas. It is expanded to twice its volume from 1 meter cube to 2 meter cube. Question is how much work is done is in expanding this, given this, right? How much work is done. So now you know it's clear cut P और V में रिलेशनशिप दिया है और वर्क डन इज गिवन बाय पी डी वी, क्योंकि ना तो सर्कल है ना रेक्टेंगल है ना वो है, तो अब तो ये यूज करना पड़ेगा, V इनिशियल टू V फाइनल हम्म इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए पी डी वी, P और V में रिलेशनशिप दे रखा है इसने कि इट इज अल्फा V स्क्वायर डी वी, ऐसे लिख लेंगे इसको, वी आई टू V फाइनल, है ना। और ये एक्सपेंशन हो रही है, इट्स एक्सपेंशन। अच्छा गैस एंड एक्सपेंशन। हाँ, इट इज एक्सपेंडेड, gas ठीक is है। being expanded to double the volume. So it's in a case of expansion. So obviously, the work done will be positive. यस, एक्सपेंशन The है। gas is getting अब हमने पढ़ा था ऊपर अभी हाँ जी, expansion और पॉजिटिवली है। compression में हम्म work done will be positive. So if you put the values and you say, okay, this is alpha V cube by 3 VI to VF. So alpha की वैल्यू मालूम है, VF मालूम है, ये मालूम है, put substitute the values, get the answer. 2 cube -1 क्यूब और अल्फा बाहर लिखा ही हुआ है, अल्फा बाय 3, अल्फा की वैल्यू डाल दो। 5 एटमॉस्फेयर मतलब 5 इंटू 1 इंटू 10⁵, वही 1 एटमॉस्फेयर इज 13.6 मीटर ऑफ मरकरी। रोजी एच से 1 भी आता है, 1 एटमॉस्फेयर इज दिस मच, 1.03 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू 5 करके आंसर इट्स 1.013, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 1.013 into 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हम्म So this is an example of JEE mains where they ask you to do integration instead of these basic questions which are asked in school. थोड़ी मैथ्स लगा दी मतलब, और क्या, कुछ और तो कुछ करा नहीं है खास। नथिंग ऐसे रॉकेट ग्राफ बना देगा, सेमी सर्कल बना देगा और कुछ टेढ़ा साइंस। मेढ़ा ग्राफ बना देगा, फिर वो उसमें इंटीग्रेशन भी करनी होगी, थोड़ा ग्राफ को डिटेल में रीड करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और योर इंटरेस्ट इज वेरी हाई, so we will not irritate you. We will keep it simple for you. ठीक है। कभी कोई ना तो कोई तो बच्चा मिलेगा जो इंटरेस्टेड होगा, गरीब ही होगा सही। हाँ जी। अब नहीं बोला सरकास्टिकली, क्योंकि ये तो सच है। हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो तुम्हारे स्कूल का मैंने तुम्हें सिखा दिया क्या आएगा। वर्क डन के ऊपर एक इंडिकेटर डायग्राम होगा और उसमें तुम्हें अगर साइन कन्वेंशन थोड़ी बहुत समझ है तो इजीली यू कैन हैंडल इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है क्या था। हाँ जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ एनर्जी कैन जी, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। राइट राइट, दैट इज करेक्ट। But in the context of thermodynamics, right, you will uh, talk in terms of a system, right? So you and change of state and all that, right? So एनर्जी there, ऑफ अ सिस्टम, हाँ मतलब system will इंटरनल absorb heat, एनर्जी। right? Q is the heat absorbed by the system. ऐसे लिखते हैं इसके अंदर, right? Q is the heat absorbed by the system, and W is the work done. It could be anything, expansion or work done हो गया, right? So if you want to measure, so what you do, you measure heat absorbed by the system and work done, and then you calculate a quantity which is Q minus W. Okay.
अच्छा जी, Q माइनस डब्ल्यू आपने कर लिया, तो मतलब देन तो व्हाट यू फाइंड इज दैट Q minus W, irrespective of the path you take. Okay. So you take this path, you take this path, you take this path, you take this path. What you find is that the uh, Q minus W remains constant. तो Q minus W में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्योंकि साइन लग जाएगा अपने आप ही। नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है ना। हाँ हाँ, वो अभी साइन कन्वेंशन एंड में लगाना है, बट अच्छा। the the Q minus W, irrespective of the path which is followed, right? So we can do this in any number of ways, and because initial and final state को कई तरीके से लेके जाया जा सकता है, अलग टेम्परेचर के थ्रू फलाना, अलग वॉल्यूम के थ्रू, कभी ऐसे भी ले जाया जा सकता है, ये लो जी ऐसे ले गए। नाउ व्हाट दे स्टडी इज दैट Q minus W remains same, ठीक है। right? So Q is the energy added and W is the work done. तो ये जो है सेम रहता है हमेशा, राइट? दिस इज दिस इज डिफरेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। ओके। सो इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, इनिशियल एंड फाइनल, and is also represented as U final minus U initial is equal to delta U, या U final minus UI is equal to Q minus W. When I say this is basically the change in internal energy, not internal energy, but change in internal energy. So this is change in internal energy of the system, which is this. ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, देखा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं? Like you said, we will introduce the law of conservation of energy to this. So now the change in energy of a system will be equal to what? It will be equal to all the heat transferred to the system. Sorry, let me rephrase it. Uh, अब हमें लगाना है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? मैं बोल रहा था, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके? सो टू द to create the first law of thermodynamics, right? यस। Okay. So the first law of thermodynamics is a special case of law of conservation of energy. So the the speciality, मतलब कैसे स्पेशल है ये? होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसके अंदर ये वर्ड्स तो यू क्यू डब्ल्यू वगैरह वगैरह यूज होते हैं, राइट? सो व्हाट इट व्हेन यू कन्वर्ट the first, sorry, the law of conservation of energy into first law of thermodynamics, right? The way you articulate this is that change in internal energy जो हमने लिखा है, the change in internal energy, it's basically first law of thermodynamics, uh, but the reasoning given is law of conservation of energy. The bases are this, but written in first law of thermodynamics language. The change in internal energy of whatever is the change in internal energy of a system is basically nothing but the energy transferred by way of two methods. हमने शुरू में I told you, right? There are two methods only where you can transfer energy to a system. So note the word energy. ये शुरू शुरू में मैंने बोला था there are two ways. One is Q,
You supply heat or take away heat to change the energy. The other way to change energy of a system is to do work on the system or let the system do work, right? Energy. So एनर्जी चेंज अगर आपको करनी है किसी चीज की, तो या तो उसमें हीट ऐड कर दो या हीट निकाल लो, या उस पर वर्क डन कर लो या उससे वर्क ले लो। इट विल डू द वर्क, सो उससे एनर्जी निकल जाएगी। अगर एक गैस काम करेगी तो एनर्जी वर्क डन करेगी, तो उससे एनर्जी कम हो जाएगी उससे गैस की, क्योंकि इस्तेमाल हो गई ना उसकी एनर्जी। सो एनर्जी दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, क्यू हीट और वर्क डन। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बोलता है कि द change in internal energy, I told you, is molecular level energy, right? Remains constant, and the only energy transfers. So the first law of thermodynamics focuses where? It focuses first on the change in internal energy. Okay, so I will just change my problem statement. So first law of thermodynamics किससे चिंता क्या होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चिंता एक तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड सेकंड चिंता उसकी ये कि जो एनर्जी ट्रांसफर्स होती हैं, एनर्जी ट्रांसफर्स हैपन बाय टू मेथड्स, वन इज हीट एंड वर्क। so this is what first law of thermodynamics dwells on. अच्छा जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई है, दैट इज अ फोकस एरिया फॉर इट, एंड देन इट इट फोकसेस ऑन एनर्जी ट्रांसफर्स। अच्छा जी, हीट से हुआ है या वर्क डन से हुआ है। और जब हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिंक करते हैं, सो व्हाट वी डू इज वी राइट इट लाइक दिस, दैट Q, which is the heat given to the system, gets used to increase the internal energy of the system and is used to do the work. Now, this format of the earlier we had studied this, right? That there was a whenever you do a initial to final path of the system, what you find is that the Q minus W, which is the difference of two energies associated with the thermodynamic system, always remains constant. And then you said, okay, it's defined as change in internal energy. Then you have re-articulated that into law of conservation of energy. And you said, okay, the total heat supplied, the total energy supplied to the thermodynamic system gets used up to change its internal energy and the work done. So although the way you study first law of thermodynamics is this, but then you end up articulating as this law of conservation of energy, that okay, you supplied Q, which is energy, this is also energy, and this is also energy. So Q, the heat supplied, will be used to do two things. Two other energies will get created. So, so whenever you see Q and W, the bottom line is that you're dealing with energy. These are energies actually. That's all. Energy, अगर कोई बोले what are the energy transfers, you will say Q and W are the energy transfers. And the difference of these two energy transfers is a constant called as delta U. This is the actual first law of thermodynamics, that there are two energy transfers and the difference of the two is equal to delta U. But when you restate it and link it to the law of conservation of energy, you rewrite it like this: Q is equal to delta U plus W. At a very fundamental level, it is not law of conservation of energy only. That is a conclusion of the study, that the difference of energies, which is Q and W, results in a change in internal energy, is called as change in internal energy. This is real first law of thermodynamics.
Restated in the form of law of conservation of energy is this, the restatement. Okay. There's a subtle way of articulating the first law of thermodynamics. It's some people just keep it simple and ठीक है जी, it's law of conservation of energy and the end of it, finish हो गया जी, ठीक है, वो भी चलता है, works, nobody challenges that, but the real, ये क्या है? Okay, let's move forward. So you can memorize anything, but in your mind, if you have this in your mind, this is a better way of understanding it. But yeah, if you want to solve numericals and all that, Q is equal to delta U plus W is enough to solve simple numericals. हो जाता है solve, कोई दिक्कत नहीं आएगी. I'm just looking at something. If I find something. Okay, one of the problems with first law of thermodynamics obviously is that it fails to tell you the direction of heat transfer. Okay, it तो इसके fails अलावा to तो और भी लिमिटेशंस है. हाँ fails to डिसऑर्डर नहीं बता सकता ये. हाँ वो केमिस्ट्री वाले हैं. Okay, Yeah. entropy वगैरह, right? So it fails to give you the heat transfer direction. Heat transfer direction is not possible. नहीं बता पाएगा आपको. Right? It also is not able to tell you the conditions which are required for the transformation of heat into work. वो भी नहीं बताएगा आपको. What are the conditions? Right? So conditions of converting heat, which is an energy, into work, which is another energy. ये भी नहीं बता पाएगा आपको कि क्या मतलब होता है. और तीसरी चीज जो बहुत ही अजीब है वो ये है कि ये नहीं बताता कि ये जो क्यू है, अगर आपने किसी सिस्टम को क्यू सप्लाई करा तो वो सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए ना. ये क्या चक्कर है कि क्यू जो है वो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू में कन्वर्ट होता है. ये 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं है, जितना दो उतना ही दो. तो इट ऑल्सो फेल्स टू टेल यू व्हाई द होल क्यू इज नॉट converting into W. Why this delta U also comes into picture, right? If they ask you a very theoretical question, what are the failures of first law of thermodynamics? ये बड़े प्योर साइंस के मतलब ठीक है, मतलब हमको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी कोई खास. When we study second law, then we will try to address these problem statements कि ऐसा क्यों होता है, etc. So sign convention, I think sign convention you already know. हाँ जी. If you supply heat, energy, it is positive. If you take away heat, it is negative. If you do work on the gas, it is negative. If you do work by the gas expansion, it is positive. If the temperature of the gas rises, then delta U is positive. Straightforward. डेल्टा यू टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो भी है, वो डेल्टा यू बढ़ गया तो पॉजिटिव टेम्परेचर राइज विल क्लियर कट इंडिकेट. और इसका फॉर्मूला भी यही होता है, शायद अभी आगे हम पढ़ेंगे NCV dt वगैरह, डेल्टा टी. तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कितने मोल्स ऑफ गैस है और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है. तो ये हीट जो है, some portion of it you can see from first law of thermodynamics gets converted into delta U. Okay. So sign convention, if the temperature falls, if the temperature falls, this delta U will be negative.
लोअर्स। स्कूल में कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, ग्राफ दिया होगा और माइंड में होगा कि किसी भी इनिशियल या फाइनल पाथ से मैं जाऊंगा तो मैं यू डेल्टा यू रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाटएवर पाथ आई टेक, and you will apply the equations to each of the indicator diagram में जो लाइन दे रखी होगी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अंदर, and they will ask you to calculate many things using that graph. So एक क्वेश्चन ये भी आता है 5 मार्कर के अंदर। लेट मी जस्ट सी योर स्कूल असाइनमेंट अगेन। उसमें कोई ना कोई 5 मार्कर में क्वेश्चन होता है एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम में। they will ask you to calculate u q w, लल्लू टाइप का क्वेश्चन होगा थोड़ा। दिया है इन्होंने एक क्वेश्चन, बट आई थिंक system goes from A to B, PV diagram, heat given to the path is, yeah, the heat exchange by the system in path 2। थोड़ा सा दिया हुआ है बट इसमें इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं है। Yeah, but there is a case study which they have given, by the way। क्वेश्चन नंबर 30th है, उसी के पार्ट्स थे ये। केस स्टडी दी हुई है, अभी करते हैं केस स्टडी, बट लेट मी फर्स्ट गेट यू कंफर्टेबल विद दिस। So delta U is path independent, is your one of the key takeaways. It is path independent. I'm going to the next page. Let me share a question with you so that this stays with you. Okay. Let's say you have a graph like this, and you are given 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here also you're given 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, so on and so forth. This is 20, 10. This is volume, and this is in liters. So volume in liter, and this is your pressure in pascals. Okay, and this is your 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के लिए भी और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसी फॉर्म में ही आता है क्वेश्चन। तो आपका एक प्रोसेस है ये वाला, स्ट्रेट। यू कैन सी इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक वाइज कांस्टेंट, एंड 20 से 50, so you go from 20 to 50, so this is constant pressure, and then there is a, you come back to, you can see it is, I think, anti-clockwise। यहाँ पहुंचे आप, okay, नहीं सॉरी, आप यहाँ से you will reach 70 का है, ये 70 पे पहुंचे, और फिर उसके बाद you go back from here to here, it's a straight line, so this pressure again remains constant 2। तो ये 2 के लेवल पे है, ये 6 के लेवल पे है, और ये ग्राफ ऐसा है, वॉल्यूम इन लीटर एंड pascals। So this is, now first question is, this is a cyclical thermodynamic process, and the states, it changes its states from A to B, A to B, B to C, and C to D। ये सारी states है, and the system has an internal energy of 400 millijoule in the state C। Okay, so यहाँ पे state C जो है, it has 400 millijoules of energy। Okay, the question is, first, what is the internal energy of the system in the state B? And it is given that from that during the process from B to C, the heat given to the system from B to C, the heat which is added to the system
Q, BC is given to be plus 50 millijoules. 50. Sorry, ये दिख नहीं रहा ठीक से. Let me rub this off. 50 millijoules. So B to C में आपने ये दिया. C पे you know the, and question is what is the UB? UC is given to you as 400 millijoule, and you have to find UB. QBC is known to you. So you know it's a thermodynamic process from B to C, and it's a PV indicator diagram. Therefore, the work done from B to C, which is definitely a compression case, I think. Compression ही है. B to C, the volume is reducing. And so the work done is the change in volume, 70 minus 20 PdV. And it is 2 Newton meter per second square. This is Newton meter या Pascal जो भी है. So you know that we are referring to this area under the graph to find the work from B to C with the negative sign. It's a compression. We can convert it into 10 raised to power minus 3 because this is in liters. So this is minus 50 into 2 into 10 raised to power minus 3. Minus 100 into 10 raised to power minus 3 joules, and we can convert it to millijoule by getting rid of this and say minus 100 millijoule. That is the work being done from on the gas from WBC. So you have to apply the first law of thermodynamics on BC. Now, you know the first law of thermodynamics will state that Q is equal to delta U plus work done, right? And we are only referring to BC process. The Q in the BC process is given to be that we have supplied it. So this is definitely plus 50 millijoules. Okay, and and your final energy is 400. Initial is at B. This is UC actually. Delta U. So ये delta U लिखा है मैंने. Plus the work done during this process, which is minus 100 millijoule. So ये इधर चला जाएगा. This will become 150 millijoule is equal to 400 minus UB. So your UB comes out to be 250 millijoule. Answer. Any doubts? नहीं. ठीक है. Now हाँ. calculate the work done during the whole process. CDBA. कैसे करोगे? You can divide it into rectangle and a triangle, or you can use quadrilateral. जो मर्जी यूज कर लो, आपकी चॉइस है. Sum of parallel sides and the perpendicular distance. ये parallel sides है और ये perpendicular distance है. Just see the direction. It is what? Clockwise, anti-clockwise, and तो clockwise है तो positive work done हो गया. तो जो भी आंसर आएगा क्वाड्रिलेटरल से, या दो ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल ले लो, या यहाँ से खींच लो एक लाइन, मेक इट, इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो. That is easy part, right? To calculate the area under the curve. तो area under the कितना आ रहा है देखना जरा. The pressure changes 4 rectangle में, ये वाला 4 है. This is 4 multiply by change in volume. So this is change in volume, ये 50 है. 50 से 20 या कह लो 30 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. ये तो हो गया रेक्टेंगल वाला पार्ट. लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाफ बेस इंटू हाइट. ये हो गया हाफ बेस इज 52 70 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू हाइट. दिस इज 4. तो इसको सॉल्व कर लें अगर, so वी विल गेट एन आंसर. कितना आ जाएगा ये? 4 30s आर 120. Yes. एक 120 आ गया. और सॉरी, हमें तो
CDAB में निकालना है ना, CDAB, ठीक है, पूरा है CDAB। इसका वॉल्यूम है, इसका ब्रेड्थ है 2260, नहीं 2250, सॉरी, तो 30 हो गया। वॉल्यूम चेंज 20 से 50, ठीक है। और हाइट है इसकी 2 to 4, ठीक है, 4 into 120, और ये एरिया हो गया इसका हाफ। बेस इज 20, 50 से 70। हाइट इसकी भी 4 है, तो 120। एंड ये सही निकाला है हमने, हम्म। वर्क डन सही निकाला है, सही निकाला है यार। हाँ। इस ट्रेपेजियम का हम निकाल रहे हैं ना एरिया। यो। आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी अनदर एरिया एंड दिस टू बी अनदर एरिया, तो आई एम जस्ट एडिंग दीज टू। तो ये 120 प्लस 10 प्लस 40 कितना है, 160। हाँ जी। एक मिनट यार, व्हाट इज द वर्क डन? 2 से 4, और 30 से 3, 30 चेंज हुआ, ठीक ही करा यार ये 30। दिस इज हाइट, 2 to 6 हाइट, हाइट इनटू दिस, एंड दिस इज ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, 5270। ठीक है भाई, मेरा, यू हैव एनी डिफरेंट आंसर? नहीं तो। ये एरिया तो सही निकाला यार, इसमें क्या गलती लग रही है, 160 ही है। ठीक है, so let's say area, the work done throughout this cyclic process, C D B A or whatever जो भी है, CBDA is calculated to be this. Now question is, last part is find the what is the heat supply during CDAB? Q. CDAB. Work done during CDAB is known, right? 160 millijoule है, तो how will you now calculate the Q? वर्क डन निकाल लिया, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली इट्स डेल्टा U, राइट, प्लस वर्क डन। वर्क डन आगे 160। अब CDAB में डेल्टा U कितना है? CDAB, देखो अब C से स्टार्ट हुए थे, D पे गए, A पे गए, फिर B पे गए। डू यू रिमेम्बर, यू हैव एक्चुअली टेकन अ पाथ ऑफ CDAB बिटवीन C to B। नाउ द पाथ इज अ लॉन्गर पाथ, ये वाला पाथ ले रहे हो, लेकिन पहुंच तो आप C से B पे ही रहे हो ना। हाँ। और यू भी आपने कितनी निकाली थी, जब निकाली थी तो 250, दिस वाज 250, यस। this was 400। So we know, irrespective of the path you take, whether you go direct or you go, whether you move from B to C like this, or you move from B to C like this, the internal energy change will remain the same. It is path independent, right? तो अब आप C to B गए हो, चलो उल्टा गए हो, लेकिन डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है? दिस इज 250 एंड दिस इज 400। आपने क्या पाथ लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके C to B गए हो आप। वैसे आप 250 टू 400 जा रहे थे, 400 टू 250 गए हो। सो योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज देन -150। भाई यू स्टार्टेड एट 400, यूर एंडिंग एट 250, राइट? तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मालूम चल गया अपना, कि इट इज
बेसिकली नथिंग बट बीसी वाला ही है। पाथ तुम जो मर्जी ले लो, सी डी बी ए से चले जाओ या इधर से चले जाओ। सो माइनस 400 प्लस 250 प्लस 160। मेक सेंस? यस पाथ सर। इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ गया अचानक ही। बोलता है व्हाट इज द हीट सप्लाइड फ्रॉम सी डी थ्रू सी डी ए बी। तो हीट सप्लाइड, अच्छा जी, वर्क डन निकाल लिया। अब अब फॉर्मूला था डेल्टा यू। अब डेल्टा यू कहाँ से लाएं? डेल्टा यू इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो देखा कि लास्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट सी है और दूसरा पॉइंट बी है, ये तो दो पॉइंट है जिनके बीच में हमें ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज अ एनर्जी डिफरेंस, इंटरनल एनर्जी डिफरेंस, उसी को यूज कर लिया। दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन जहां पे पाथ इंडिपेंडेंस यूज होती है। ये क्वेश्चन जरूर आता है। हिडन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे नहीं लिखा होगा यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस ग्राफ दे देंगे और वर्क डन निकालने को बोल देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम बिटवीन टू पॉइंट्स irrespective of the path you took. Okay, let me just show you. I hope you have got slightly comfortable with this. हाँ जी। तुम्हारे स्कूल ने क्या पूछा? उन्होंने बहुत बड़ा एक वो लिखा एस से पहले। उनको लिखना भी चाहिए। और उन्होंने उसी की केस स्टडी बना दी। ये तुम्हारे स्कूल का एस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत सारी गाथाएं लिख दी हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। चार दीस। एक हमने कर ही लिया था, लास्ट वाला पाथ, किस पाथ में वर्क डन ज्यादा है, राइट? वो भी इसी का पार्ट था एक्चुअली। तो अभी मैं आई एम नॉट स्टार्टिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो सेकंड लॉ लेट्स मतलब जस्ट, कौन सा, एंट्रोपी वाला नहीं होगा फिर? नहीं नहीं, इसमें नहीं होता वो। अच्छा। हाँ, इसमें नहीं होगा। पढ़ो जी ये। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। वही जो हमने इंग्लिश पढ़ी है सारी, उसने ऐसे बना के क्वेश्चन पूछ लिया। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर, पागल, एनर्जी, राइट? एनी डाउट? आई लॉस्ट योर वॉइस। नहीं नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। An electric heater supplies heat to a system at a rate of। क्यू, हम्म। जूल्स पर सेकेंड दिया हुआ है और सिस्टम परफॉर्म्स अ वर्क, मतलब गैस इज डूइंग द वर्क। सो क्यू इज इक्वल टू, So 40 joules per second। हाँ सिंपल, मतलब इसने उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय टी कर दिया, दैट्स ऑल। Q is equal to delta U plus W divided by T divided by T divided by T. This is given to be 120. This is to be found out, and this is 80 watts. So X is equal to 40. Answer. ये मैंने प्लस इसलिए लिया क्योंकि सिस्टम ने काम करा। काम किया। ठीक है जी, ये वाला। सिस्टम पे काम हुआ है। ये अच्छा, सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम है। वाई द सिस्टम। अच्छा तो यहाँ पर उल्टा चलता है। हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है। जब सिस्टम काम करता है तो वो कहता है जी मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो काम करता हूँ।
हाँ, और वैसे केमिस्ट्री में उल्टा होता था। यस। देखो इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, हम्म। ये आप ए से बी जाओ, ओए अभी है, ए से बी जाओ या ऊपर से जाओ या इस साइड से, डेल्टा यू रिमेन्स द सेम। हम्म। बट आई थिंक द क्योंकि इसने वो ट्रिक से पाथ वन में इसने क्यू सर और आई डब्ल्यू थिंक दे इट दिया इज है। डी 150 950 जूल्स। यानी आंसर नहीं है, सॉल्व इट, मुझे आंसर नहीं चाहिए, थिंक थिंक नहीं, राइट इट डाउन एंड शो मी द कॉन्सेप्ट। मुझे क्या मालूम क्या है भाई, यू हैव नॉट इवन सॉल्व्ड इट, यू हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनी लॉजिक, कोई स्टेप नहीं, कुछ नहीं, थिंकिंग से कैसे होगा? राइट द लॉ एंड सॉल्व इट, यूज कॉन्सेप्ट, डोंट डू इट मेंटली। ठीक है सर, हीट जो है दोनों पार्ट्स में। डेल्टा यू दोनों पाथ में सेम रहेगा, हाँ। वट एवर पाथ यू टेक मेक्स नो डिफरेंस, किसी भी पाथ से चले जाओ तुम। पाथ वन के बारे में सब बता दिया है। अच्छा, वर्क डन बताया, तो हीट एक्सचेंज बाय सिस्टम, हीट इज तो यू एक्सचेंज। कॉमन है, यू कॉमन है दोनों में, डेल्टा यू कॉमन है, तो यू हैव टू राइट इट टू ट्वाइस, राइट द इक्वेशन ट्वाइस, Q is equal to delta U plus, हाँ you can write it this also। हम्म, ये कौन सा लॉ है यार, मैंने ये लिखवाया है, अच्छा एक मिनट। Q is equal to delta U plus W, so delta U is equal to Q minus W बताया था मैंने यार, it is difference in the two energies। केमिस्ट्री। उन्हें 2 घंटे से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का क्या मतलब है? नहीं सॉरी, मुझे केमिस्ट्री वाली आदत है ना, ऐसे लिखते थे। आदत नहीं है, एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, W2 कितना दिया हुआ है? W2 is 150 जूल मोर देन अच्छा ठीक है, तो एक W प्लस 150 होगा और एक W हीट होगा, गिवन बाय द पाथ वन। ये अच्छा। कम है, ये कम हाँ। है, या तो इसको W1 माइनस 150 लिख लो, या उसको W2 प्लस 150 कर लो, मर्जी है। लेकिन अंडरलाइंग देखो क्या यूज हुआ, पाथ इंडिपेंडेंस में डेल्टा यू यूज हो गया। 150 माइनस W1 यानी कि -150। हाँ ठीक है, W1 नहीं नहीं गलत लिखा है, वो कम है, कम है, W2 कम है, माइनस W1 माइनस वन माइनस वन फिफ्टी फिफ्टी वाह भाई वाह। तो 1100 इज इक्वल टू Q2 प्लस 150। तो Q2 आ जाएगा 950। डन, कर ली तुमने सही केस स्टडी स्कूल की। सही तो बताया था 950।
पूरा लिख के आना है स्टेप वाइज, तब मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो कट जाएंगे। अच्छा, मुझे केस स्टडी का आज तक हुआ ही वैसे एमसीक्यू का। सो जाओ सो जाओ। सॉरी हाउ आई एम। मोटिवेटेड यू आर। अरे नहीं। जेई मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, सोएंगे, क्या मतलब यार। देश का भविष्य है हमारे। नहीं। नहीं नहीं जेई के पेपर में सो गया मैं जाके। एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है, और एक ओके। क्वेश्चन ये डेल्टा यू पे बेस्ड आ सकता है, पाथ पे। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्सपेंशन, ये वो सब पता होना चाहिए। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, व्हाट इज अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब here we allow the system to equalize temperature throughout, pressure throughout, it takes time, it's an infinitely slow process, one marker। ठीक है, गो रिवाइज, लेट्स मीट एट 6 o'clock टुडे। 6 बजे मिलते हैं। चैप्टर खत्म फिर उसका? नहीं नहीं, चैप्टर बहुत लंबा है, चिंता ना करो, बट इफ यू डू इट ट्वाइस अ डे, इट इज वेरी लाइकली दैट वी विल फिनिश द कोर्स फास्ट। तो 6 बजे मिलते हैं। अच्छा, और 6 बजे? हाँ, 6 o'clock। ठीक। ठीक है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा ना फिर, क्योंकि चैप्टर ज्यादा है, एक वेव्स भी है, एसएचएम भी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है। तो ये ठीक। आराम से खत्म कर लेंगे अगर हम ऐसे मिलते रहेंगे तो। ये लग फर्स्ट लॉ आपने कर ही लिया। हम्म, अब इसके अंदर क्या बचा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह वगैरह की डेरिवेशंस। स्कूल में तो तुम्हारी डेरिवेशन आई नहीं कुछ भी। कार्नट इंजन, कार्नट इंजन करवाया स्कूल में? कराया होगा। कराया है। कराया है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज हम शाम को मिलेंगे तो वी विल डू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड अलग अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और फिर कार्नट इंजन। ओके। हो जाएगा जल्दी, इतना टाइम नहीं लगने वाला।